Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll start the revision of chapter 4 of history, that is earliest civilization. So in this topic we'll come to know about the Indus Valley civilization and the extension of main sites of Indus Valley civilization today. And we'll learn about the cities of Indus Valley civilization. So students, as we know that early human beings used to settle down near rivers. There was a reason also which we discussed in our previous chapters, that why early humans settled down near rivers. So early humans settled down near rivers because of availability of water, food, fertile land. So these are the reasons why early humans settled down near rivers. And that is why the earliest cities, whether in India, whether in our subcontinent or outside India also, the first cities settled down near river valleys. So in India, the first cities came into existence नियर दी रिवर इंदुस. तो जो भारत में हमारे जो पहले शहर, फर्स्ट सिटीज जो डेवलप हुई या सेटल्ड हुई, वो कहाँ पे हुई? नियर रिवर इंदुस. एंड दीज सिटीज वर डेवलप्ड बिफोर 1700 years ago approx. Now our first topic, that is Indus Valley civilization. So in 1856, when two British engineers were laying railway lines, they found ruins of an ancient city. तो उनको एक पुराने शहर का मलबा मिला वहाँ पे, या उनको एक पुराना शहर वहाँ पे दफन मिला. And in 1921, राय बहादुर दयाराम साहनी first excavated Harappa on the banks of river Ravi in Montgomery district of Western Punjab, which is in present day Pakistan. तो सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक्सकेवेशन, खुदाई के दौरान हड़प्पा सिटी को खोजा on the banks of river Ravi, which is in present day Pakistan. And in 1922 to 23, the Rakhal Das Banerjee discovered the ruins of Mohenjo-daro on the river Indus in Larkana district of Sindh, which is also in present day Pakistan. तो 1921 में they excavated, राय बहादुर दयाराम साहनी excavated Harappa, and in 1922 to 23 Rakhal Das Banerjee discovered Mohenjo-daro on the bank of river Indus, and both the sites are now in present day Pakistan. While excavating the Buddhist temple, Rakhal Das Banerjee found a whole city अंडर द अर्थ. तो जब वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स की एक्सकेवेशन, खुदाई कर रहे थे, तभी उनको एक पूरा का पूरा शहर जमीन के अंदर दबा हुआ मिला. Now, since most of the cities were found in the Indus Valley civilization, therefore it was named as Indus Valley civilization. क्योंकि ज़्यादातर जो भी शहर पाए गए थे खुदाई के दौरान, वो इंदुस नदी के या सिंधु घाटी के पास ही पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया? इंदुस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता. It is also known as Harappan civilization. And why it is also known as Harappan civilization? Because हड़प्पा was the first city to be excavated. क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था जिसकी खुदाई हुई थी in 1921. That's why this civilization is also known as Harappan civilization. In starting, it was believed that this civilization is restricted to only Indus River, but after further excavation, it was found that this civilization or the cities are
extended means और ज़्यादा फैले हुए हैं to the western part of India and to the northern part of India also. Now we'll come to know about the cities which excavated along with हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. हड़प्पा और मोहनजोदारो के अलावा भी वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और भी कई सारे सिटीज पाए गए थे. नाउ विल कम टू नो अबाउट दैट. टॉपिक इज extended and main sites of Indus Valley civilization. So excavation showed that Indus Valley civilization had been extended from Balochistan and Sindh to different Indian states. Balochistan and Sindh, which is in present day Pakistan, to different parts of Indian states. तो ये कहाँ तक फैले हुए हैं, ये जो civilization है इंडस वैली civilization, इसका extension कहाँ तक है, फैलाव कहाँ तक है? बलोचिस्तान एंड सिंध से लेके इंडियन स्टेट्स लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, to राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. Many sites of this civilization have been excavated, but the Harappa and Mohenjo-daro are the most important cities of the civilization. बहुत सारे शहर खुदाई के दौरान पाए गए, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो ही दोनों मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के. नाउ अदर फेमस साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन आर कालीबंगन in Rajasthan, Rangpur and Rojdi in Gujarat and Ropar in Punjab, Alamgiri in Uttar Pradesh and Amri, Chahundaro and Koddizi in Pakistan. Some sites or some cities have been excavated while some cities are still awaiting for excavation. कुछ शहरों की खुदाई की जा चुकी है जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन अभी भी कई सारे शहर एक्सकेवेशन के लिए वेट कर रहे हैं, खुदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन? सो द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी वेल प्लान्ड एंड वाज सेटल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. There were proper streets, there were proper drainage system, houses were built on both the sides of the road, and the main streets of the cities were about 800 meters long and 10 meters wide, and there was houses on both the side of the street. सड़क के दोनों तरफ घर बने हुए थे. Like nowadays there is well planned streets, and each part of the city was made up of walled section. means शहर को दीवारों से different parts में divide किया गया था, and each of these section included different buildings like public buildings with markets, craft work, etc. and houses. The cities were divided into two parts, the upper town and the lower town. So the cities of Indus Valley civilization was divided into two parts, the upper town and the lower town. The upper part of the city or the upper town was known as citadel or acropolis, which was settled on the raised ground, जो कि ऊंचे जमीन पे या ऊंची जगह पे स्थित होता था. उसको हम अपर टाउन या फिर सिटाडल या एक्रोपोलिस कहते थे. सिटाडल हैड हाई वॉल्स व्हिच प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम द फ्लड. तो सिटाडल में ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी जो लोगों को बाढ़ से बचाती थी. एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी देयर वाज रेसिडेंशियल हाउसेस. और जो लोअर पार्ट होता था, लोअर टाउन होता था, वहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसेस होते थे, इंसान के रहने के घर बने होते थे. एंड इन द अपर पार्ट देयर वाज मार्केट सेक्शन एंड पब्लिक बिल्डिंग्स. विल लर्न अबाउट पब्लिक बिल्डिंग्स कि यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज पब्लिक बिल्डिंग्स. तो पब्लिक बिल्डिंग क्या होते थे? सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स वर बिल्ट इन द सिटाडल और एक्रोपोलिस एरिया, एंड द पब्लिक बिल्डिंग्स वर लाइक ग्रेनरी, टाउन हॉल, the great bath and religious structures. So the first one is granary.
and the rulers and priests also lived there in the citadel और एक्रोपोलिस एरिया। ना सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी सिटाडल या एक्रोपोलिस में, इसके साथ साथ जो रूलर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो भी कहाँ रहते थे? citadel area में, the upper part of the city. Now the first public building was granary. So granary was the largest building, and archaeologists believe that the granary was used to store the extra grain, and the granary was situated near the river so that easily the grains can transport from one place to another. Now our next one topic is the Great Bath. This topic will continue in our next class. Thank you class. Read the chapter properly and don't forget to give your attendance in the comment section.